Hey everyone, welcome back to Arijit Talk Sports. This is Arijit and आज हम बात करने जा रहे हैं about who is going to be the biggest challenge to Lewis Hamilton in the upcoming 2020 Formula 1 season. As you might have heard, in the past 1 week, we have had some amazing news if you're a Formula 1 fan. तो जो न्यूज़ है कि जुलाई 5 से Formula 1 का जो 2020 सीजन है वो शुरू होने वाला है. सो देवर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि ये पूरा सीजन कैंसिल करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है. इनिशियली 8 रेस वीकेंड्स अनाउंस हुए हैं. अभी सारे रेसेस यूरोप में प्लान्ड है. तो आई मीन द Formula 1 सीजन इज बैक. इट्स गोना हैपन एंड इट्स स्टार्टिंग जुलाई 5. सो दैट इज द गुड न्यूज़. नाउ अब इसके बाद हम बात ऑब्वियसली करने लगे हैं कि who is supposed to win the 2020 Formula 1 season. We can finally get talking as F1 fans that who is going to be the champion, who is supposed to be the champion, who is going to be the biggest challenges this year. Okay, so सबसे पहले obviously मैं अपना prediction सबसे पहले दे दूं कि obviously Lewis Hamilton is by far the most likely to go ahead and win the Formula 1 World Championship again this year. Obviously 6-time world champion, पिछले 3 साल से जीत रहा है. He is an amazing driver, talented. अभी अपने पीक पे है. मर्सिडीज के साइड ड्राइव कर रहा है, जो मर्सिडीज की टीम पिछले 6 सालों से लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रही है और कमाल की टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा बनाती है. सो मर्सिडीज आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड सो इज लुइस हैमिल्टन. तो मुझे लगता है उस कॉम्बिनेशन को हराना बहुत मुश्किल होगा. एंड लुइस हैमिल्टन is I would say for me Lewis Hamilton is the favorite to go ahead and win his 7th world championship and he will be the man to beat this year. Okay, तो वो हो गई फेवरेट की बात. And yes, making that pick was easy because most Formula 1 fans and experts are picking Lewis Hamilton to win his 7th world championship this season. बट बात करते हैं कि कौन उनके लिए चैलेंज रहेगा. तो नंबर 3 से नंबर 1 पे जाएंगे. नंबर 3 उनके थर्ड सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होंगे. एंड फर्स्ट ऑब्वियसली ही विल बी द सेकंड मोस्ट लाइकली टू गो अहेड एंड विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर लुइस हैमिल्टन. तो नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा मैक्स वर्स्टैपेन को. क्यों? मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इज द मोस्ट टैलेंटेड ड्राइवर ऑन द ग्रिड. अगर आप सिर्फ टैलेंट पे बात करो तो आई वुड पिक मैक्स वर्स्टैपेन एज नंबर 1. तो मैक्स वर्स्टैपेन सुपर टैलेंटेड और उससे भी ऊपर कि वो रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते. ही विल नॉट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स. ही विल बी वेरी वेरी विलिंग टू ग्राइंड आउट विंस. और ये जो मैक्स वर्स्टैपेन का टैलेंट है और जो उनका ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इस दोनों को मिला के आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स दैट Formula 1 हैज एवर सीन. बट उनका जो ड्रॉबैक है कि वो रेड बुल में है ना. रेड बुल अमेजिंग टीम, बट मुझे लगता है कि अभी मर्सिडीज और फरारी के लेवल पे नहीं है. इसलिए आई पिक मैक्स वर्स्टैपेन एज बीइंग द third most dangerous challenger to Lewis Hamilton's title run. Second most dangerous challenger to Hamilton's title run will be his own teammate from Mercedes, Valtteri Bottas. Now why? First of all, I think that Valtteri Bottas is not the most talented driver on the grid, and I think oftentimes he's also boring. But just because he's in a Mercedes car, which in my opinion is the best car on the grid, and he's on the best team, तो मुझे लगता है कि Valtteri Bottas is in with a chance. और हम लास्ट फ्यू सीजन से देख रहे हैं कि वो लुइस हैमिल्टन को तगड़ा चैलेंज दे पा रहा है. एंड समटाइम्स ही इज जस्ट नॉट विलिंग टू गिव अप द विन फॉर लुइस हैमिल्टन, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का हंगर दिखा रहा है. सो फॉर दैट आई थिंक लुइस हैमिल्टन शुड नॉट टेक हिम लाइटली. आई मीन इफ Valtteri Bottas can get a few wins early on and then he can keep it up, then definitely Valtteri Bottas जीत सकता है सीजन. और फिर मर्सिडीज के पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि लुइस हैमिल्टन को वो प्रेफरेंस दे Valtteri Bottas के ऊपर. अगर स्टार्टिंग में रेस जीत पाए Valtteri Bottas, और क्योंकि ये छोटा सीजन है, I do think that Valtteri Bottas has a very good chance to win a Formula 1 World Championship this season. But I definitely think just because उनके पास उतना हंगर नहीं है जितना बाकी ड्राइवर्स के पास है, और definitely Lewis Hamilton जितना हंगर नहीं होगा, तो मुझे लगता है Valtteri Bottas is only going to be the second most dangerous challenger to Lewis Hamilton, despite being in the same car as him. The number 1 challenger to Lewis Hamilton will be for me Charles Leclerc. Now why? Charles Leclerc, according to me, is almost as talented as Max Verstappen, and that is saying a lot. So he's super talented. Plus, now he is the number 1 driver at Ferrari. He just outscored Sebastian Vettel last season, and he has established himself as the Ferrari number 1. तो मुझे लगता है डेफिनेटली लास्ट सीजन जो उन्होंने इतने सारे रेसेस जीते, इतने सारे पोल पोजीशंस मिले, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा टॉप टीम के लिए ड्राइव करने के लिए. तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ही विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दिस सीजन, और छोटा सीजन है तो ही नोज की एक्सपीरियंस हो सकता है शायद कम काउंट करे. तो चार्ल्स लेक्लेर्क, आई मीन अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे रेसेस में परफॉर्म किया लास्ट सीजन, अगर वो इस तरीके से इस सीजन में परफॉर्म कर पाए, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी चैलेंजर नंबर 1, एंड आई एम गिविंग हिम दी edge over Valtteri Bottas because obviously I think he has more hunger to win the world championship, and an edge over Max Verstappen because he's in the much better car. तो मुझे लगता है चार्ल्स लेक्लेर्क डेफिनेटली बहुत अच्छे
कार में, बहुत टैलेंटेड ड्राइवर है, बहुत हंग्री रहेंगे, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे सके तो चार्ल्स लेक्लेर्क डेफिनेटली हैमिल्टन के लिए चैलेंजर नंबर 1 रहेंगे फॉर दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप. So with that we can end the video. I am very excited that obviously that Formula 1 is coming back because they were at many points I thought that we'll have to wait it out till 2021 and there is going to be no Formula 1 racing in 2020. So obviously I am very excited. Hope you all are equally excited. तो comment section में comment करके बताना कि who do you think is going to be the number 1 challenge to Lewis Hamilton this season. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके comments को देख के. अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो please like, comment, share and subscribe and see you guys in the next one as always.